Bismillahirrahmanirrahim. So today in this video we are going to do two more interesting computer vision project using OpenCV Python library. So the first project will be that how we can draw shapes on any image or any window using mouse or our keyboard button. It's quite interesting project because you will be learning a lot of functionality OpenCV का. So ये तो हो गया first project. But the second project will be how to take color values or coordinates values from your image. Let's say if I want to take X and Y coordinate, the moment I click, let's say I am going to click on this area. So I want to take the X coordinate value and Y coordinate value from this image. And the same thing if I want to click on this area. So I want the BGR value or RGB value from the image. So we will do both these two projects with explanation and understanding. But first we need to understand what are image and what are X and Y coordinates and how it's all happen. But before that we have to see the output of our project. So let's do that. So first let me show you that how we can draw shapes on window. So ये मेरा image है, मैंने open किया है. If I click left click, it will draw circle. If I click left, then it will draw circle. But अगर मैं यहाँ पे right click करता हूँ, then it will draw rectangle. Okay, on right click. So that was the first project, and we will do it. Now let me show you the second project. So just 1 minute. So I have opened this image Elon Musk. Now if I click left click, then it will give me the position. Currently my cursor is here, so from X and Y coordinate I want to take the position of this area. So left click, so it will give that the coordinates of X is 105 and the Y is at 5. Let's say at 1, sorry. Let's say I want to take the position from X and Y coordinate on this area. The moment I click my left button where the cursor is located, see, it will take X coordinate value and Y coordinate value. इसी तरह मैं अगर चाहूँ तो मैं get कर सकता हूँ. Now behind image we have pixels and each pixels has a values. So basically we have RGB values for an image. Okay, 3 channels. But OpenCV or Python reads images by using ulta process. Ulta process means BGR. Normally पूरी दुनिया में आपको RGB मिल जाएंगे, but OpenCV or Python reading BGR. So if I click right, this time I'm going to click right. As you can see, B value is this, G value is this, R value is this. Let's say I'm going to take this color, BGR. Okay, so I'll just click right. So yeah, these are the two projects. Now let's start. But before starting, let me I recommend you to get access my channel and go to playlist. और प्लेलिस्ट में मैं आपको 2 प्लेलिस्ट रिकमेंड करता हूँ. If you want to learn computer vision, OpenCV, then I recommend you to access OpenCV tutorials and computer vision project playlist. And this video, today video, I am uploading within this computer vision playlist. So it will be I think 7 or 8 project. Okay, so मैं अभी के लिए open करता हूँ PyCharm. Now in PyCharm I have already created virtual environment and I have a PNG image of Elon Musk. Now here I'll just right click new and Python. So first I'll create, let me create it trial. In this file we are going to draw shapes, but the main part will be how we can bind mouse handling events with our window. Okay, हम ये देखेंगे. So ये मैंने बना लिया. I will also create another file in which we will be implementing the coding for colors and position values. Okay, the second project. So it will be, let's say, app. Now I'm in trying. This is not trying, this should be trial. So let me refactor, rename, and this should be trial. Okay, so let me zoom in a bit more like this. Okay, it's perfect. So within trial.py I am going to import CV2 library. अगर आपने इसको import नहीं किया है, just go to your terminal. अगर आपने install नहीं किया है, and you have to type there pip install OpenCV dash Python. You have to type exactly this and enter. So your OpenCV library will be installed, but मैंने already install किया, so I'll skip that part.
Now I've just imported OpenCV. It's a library that provide computer vision functionality, a lot of functions, image processing, a lot of things, especially videos, okay, real time. Okay, so first of all, जो शेप में ड्रॉ करूंगा उसके लिए मैं अपनी तरफ से एक ब्लैंक इमेज क्रिएट करूंगा. Blank image. I'm not going to draw shape on Elon Musk. I'll use Elon Musk for the second project, but for the first project I'm going to create my own image. For that I need NumPy library as np. Now अगर आप चाहते हो कि आप एक image create करो, what you can do, np.0 functions, just call zeros function and there give a shape. So let's say I want 500 by 500 image, okay. And here you have to give it its type. So image को जब आप type देते हो वो हम normally क्या देते हैं, unsigned integer at uint at, right? Okay, perfect. Now I'll display this image. So very simple. What you have to do, just cv2 dot im show function. यहाँ पे आप दो चीज़ें देते हो, title. So let me give a title or window title. You can say image. You can give it any name. And after that the source, and the source is image. Finally, we also need to state the window. For that we use vet key. So for image normally we use 0. Also it would be a good practice to destroy all window. So let me right click and run it. Let's see what happens. So this is the black image, 500 x coordinate and 500 y coordinate, okay. Okay, perfect. But what I can do, instead of printing like this, I can say that let me cut this two part from here. मैं यहाँ पे एक infinite loop यूज करूँगा. while जब तक ये true रहेगा इसके अंदर मैं ये दो चीज़ें परफॉर्म करेंगा, और ये वेट की जो होगा मैं अपने कीबोर्ड से इसको क्लोज करूँगा, ठीक है. सो उसके लिए मैं एक लॉजिक लगाऊंगा, इफ cv2 डॉट वेट की 0 एंड यहाँ पे कुछ मास्किंग वैल्यू होते हैं. I'll explain in the previous computer vision project all these things. अगर ये इक्वल है Q के, यानी जब कीबोर्ड पे मैं Q प्रेस करूंगा जिसका मतलब है इन माय ओपिनियन क्विट, देन क्लोज द विंडो, तो इन दैट केस ब्रेक द लूप. सो लेट्स सी व्हाट्स हैपन. सो राइट क्लिक. Now this is the window. Now I'm not going to terminate or close this window from here. I'll just simply press Q, so it will be closed. Okay, perfect. अब next हम क्या करेंगे, we have displayed. Now if I run it again, just let me check the recording. Yeah, it's working. So if I click here left or right, then I want to draw something. तो उसके लिए आप what you can do, first of all we have to create here a helper function by the name of def draw. It will take couple of parameter but we will see a bit later. For now let me pass it. So अब ये मेरा इमेज का विंडो है, लेकिन मेरे माउस का अपना विंडो होगा. उस विंडो को मैं कंबाइंड कर दूंगा इस विंडो के साथ. ओके, दिस विंडो इज कमिंग फ्रॉम फॉर दिस इमेज, बट यहाँ पे मैं एक बार रन कर देता हूँ. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब देखना ये विंडो है, ये मैंने क्रिएट किया है, लेकिन जब मैं अपने कर्सर को इसके साथ बाइंड करूंगा तो उसके लिए मुझे एक अलग विंडो बनानी होगी. एंड फॉर दैट आई हैव टू क्रिएट अनदर विंडो. ओके, सो उसके लिए आप यूज करते हो cv2 डॉट नेम्ड विंडो. अब यहाँ पे एक पैरामीटर है विन नेम, यानी आप अपने विंडो को नाम दे दो. सो मैं इसको कोई भी नाम दे सकता हूँ, लाइक विन, राइट. अभी के लिए अगर मैं इसको रन करो, व्हाट विल हैपन विल सी. हियर वी हैव टू विंडोज. ओके, देयर वी हैव टू विंडोज. दिस इज माय विंडो, दिस इज द विंडो दैट आई हैव क्रिएटेड. एज यू कैन सी माय विन एंड इमेज. सो इसको मैं क्लोज कर सकता हूँ, बट इसको मैं क्लोज नहीं कर सकता क्योंकि इसके लिए मैंने कंडीशन डाला है क्यों. तो अब मैं ये जो विंडो है इस विंडो के साथ बाइंड करूंगा. तो उसके लिए आप यूज करते हो cv2 डॉट सेट माउस कॉल बैक, और इसमें आपने अपनी विंडो का नाम देना होगा जो आपने क्रिएट किया है. ये जो मैंने विंडो क्रिएट किया है, दिस इज सेपरेट थिंग. आई वांट टू bind this window with my mouse. This is the cursor, or you can say not mouse cursor, or mouse we can call it.
तो इसके लिए मुझे माई विन से इसको बाइंड करना होगा, और चूंकि मैंने चीज़ें भी ड्रॉ करनी है तो वो मेरा फंक्शन करेगा ड्रॉ। ओके परफेक्ट। अब ये चीज़ें थोड़ी देर बाद समझ में आएगी। वी विल अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स, द एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट राइट हियर। ओके, बट अभी के लिए इतना समझो कि मैंने एक और विंडो बनाया, हाँ, जिसका नाम है माई विन, और इसको मैंने बाइंड किया अपने कर्सर के साथ। जब कर्सर कुछ क्लिक मारेगा तो इस फंक्शन को कॉल करेगा और इस विंडो के ऊपर ड्रा करेगा, और ये विंडो अब मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा लाइक दिस। सो अब अगर मैं इसको रन करूँ, अब मेरा एक विंडो है, ठीक है, क्लिक मारूंगा तो कुछ होना चाहिए। सो लेट्स डू दैट। क्यों? ओके, सो या नाउ लेट्स ड्रॉ। सब कुछ तैयार है, लेट्स ड्रॉ समथिंग। सो दिस ड्रॉ फंक्शन, दिस इज अ हेल्पर फंक्शन। चूंकि अब ये फंक्शन मैंने यहाँ पे कॉल किया है, तो ये सेट माउस कॉल बैक इसको कुछ पैरामीटर पास करता है इंटरनली, जो कि आपको दिखाई नहीं देंगी। वो जो पैरामीटर है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसको हम समझेंगे जब आप कंप्यूटर विजन के बड़े प्रोजेक्ट पे काम करते हो। यू हैव टू नीड टू अंडरस्टैंड ऑल दिस। सो फॉर दैट आई कैन पास फर्स्ट ऑफ ऑल इवेंट, and it should be capital event, x coordinate, y coordinate, then we have flags. I'll explain all, okay, and finally we have param. okay, अब ये event x y flags and param क्या हैं, तो ये मैं आपको प्रिंट करके दिखा देता हूँ, ठीक है। सो प्रिंट event like this event, ओके। बाय द वे ये आप यहाँ पे स्मॉल भी दे सकते हो, डजेंट मैटर। सो मैं इसको इवेंट करता हूँ। मैं दिखाना चाहता हूँ कि इनका मतलब क्या है। प्रिंट इवेंट के बाद एक्स एंड लेट मी रिप्लिकेट दैट बाय कंट्रोल डी डी डी। सो दिस शुड बी वाई। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग and very important to understand what event x y flags and param has. उसके बाद मेरे पास flags हैं, so this is flag and I have param and this is param, so like this. अब मैं रन करता हूँ, देखना जब मैं रन करूँगा तो मेरा कौन सा विंडो पॉपअप होगा, ये विंडो। और इस विंडो के साथ बाइंड किया है मैंने किस विंडो को, इस विंडो को, बाय द नेम ऑफ दिस। और इस विंडो के साथ मैंने बाइंड किया है अपना कर्सर, और जब कर्सर कुछ करेगा तो ये फंक्शन कॉल होगा, तो ये चीज़ें प्रिंट होनी चाहिए ड्रॉ फंक्शन के अंदर। अब देखना, अगर यहाँ पे देखो मैं क्विट करता हूँ, क्यों करता हूँ, यहाँ पे कुछ प्रिंट हुए एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, फ्लैग 0, पैरम नन। इसका क्या मतलब है? और जब हमने ड्रॉ फंक्शन को यहाँ पे कॉल किया तो हमने कोई पैरामीटर पास नहीं किया। वो इसलिए क्योंकि मैंने माउस को बाइंड किया है इस विंडो के साथ। तो जैसे मैं ड्रॉ फंक्शन कॉल करूँगा, ये इंटरनली इवेंट एक्स वाई फ्लैग्स पैरम पास करता है। और ये जो है, अब देखना मेरा माउस, मेरा कर्सर यहाँ पे है, मेरा कर्सर यहाँ पे आ जाएगा तो ये यहाँ से एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू, देखें मैंने कर्सर को स्टॉप किया। द मोमेंट आई स्टॉप कर्सर इन द कंसोल यू कैन सी आई कांट सी एनी मोमेंट। सो करंटली माय कर्सर एक्स वैल्यू इज 52, माय वाई वैल्यू इज 28, flag is 0. Okay, flag is 0 because if I click then we will get something. So the moment I move, as you can see, currently my x value change, y value change, flag is 0, param or none. So मैं अभी के लिए इसको quit करता हूँ. Now my object is when I press from my keyboard left button, my mouse left button, then I want to draw circle. So very simple. If event equal to cv2.l event underscore l button down. Okay, there are a lot of keyboards button, but I'll use left button, event button. Okay, so in that case I'll draw circle. तो सर्कल आप किस तरह ड्रा करते हो, cv2.circle, ये मेरा, अगर आपने प्लेलिस्ट एक्सेस किया है OpenCV का तो आप शेप किस तरह ड्रा करते हो ये मैं बता चुका हूँ। cv2.circle ये आपसे कुछ पैरामीटर लेता है जैसे कि किसके ऊपर ड्रा करना चाहते हो, और उसका नाम है इमेज। कीप इन माइंड दिस इमेज मस्ट बी सिमिलर, डोंट चेंज द नेम, एंड दिस इमेज। ओके, सो
like this image और किस पोजीशन पे इसकी x and y कोऑर्डिनेट पे तो x and y और these are the coordinates. Now you might be thinking ये कहाँ से आ रहे, I'll show a bit later. After that सर्कल का रेडियस कितना होना चाहिए, तो मैं अभी के लिए 50 देता हूँ, ठीक है. यू कैन ऑल्सो सी द सजेशन रेडियस. इफ आई प्रेस कामा इट विल गिव मी अनदर पैरामीटर. कलर सीक्वेंस के आपकी सर्कल का कलर क्या होना चाहिए, तो वो आप यहाँ पे 255 and 0. These are the BGR RGB values and thickness. So अभी के लिए thickness में 4 डालता हूँ. तो ये हो गया मेरा अपना सर्कल. तो just let's run. So here currently I am here. Okay, I have my x and y value is 230 from x-axis and 134 from y. The moment I click I can't see anything. So what's wrong? Why it's not showing me this thing? This thing was optional, you can't print. If you want, don't print it. But cv2.circle, let me also another if event equal to cv2 dot event L button. Instead of L button I'll use this time R button. So in that case I'll draw simply a rectangle on the image from x and y coordinate. I'll explain the x and y coordinate a bit later, and for now just let me type 100 within x, and in y let me add let's say 100. Just 1 minute. And color sequence, let's say this is my color sequence, and thickness let's say 3. So if I run it again, this time let me right click. Why it's not showing me where I did a mistake? Myvin, the window names of Sam. So let me change the weight key. Yeah, that was the error, I think. Not the error, it was the frame per second. So yeah, जब मैं यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करूँगा तो आपको सर्कल ड्रा करके देगा, as you can see clearly. But if I click on right click, then I can't see on right click what I draw on right click. Just let me a rectangle image x and y. If event or button, let me run it again. Still I can't see, but circle working. So yeah, the color is black, that's why. So the color was, this color is black. So let me change it to 255. You can take this color from your Chrome browser, Google I meant. Still it's black, I don't know. Because that was the color, right? 255. Let's do some other color. Right click. If I click left, this is left. Okay, you can change the color, like you can make it purple. I think this is the purple value. It's still white. So let me run it again. It's black. Let me run it again. Right click, it's still black. Why it's representing? There is an issue. Okay, let's use pure white. Okay, so left, right. So
तो ये था एक सिंपल सा प्रोजेक्ट जिसमें हमने देखा हाउ यू कैन ड्रॉ शेप्स. नाउ before moving to the next project, we need to understand x and y coordinates, right? But first let me check recording because sometime it's stopped. So let me make it bigger. तो ये हमारे पास एक image है, ठीक है. Now this image is nothing but a matrix. Matrix is nothing but rows and columns, and rows and columns has a cells and each cell has a value and that value is nothing but a pixel. How? So ये हमारा इमेज है, ठीक है. इसके आपके पास दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, x कोऑर्डिनेट इज नथिंग बट द रोज एंड y कोऑर्डिनेट इज नथिंग बट द कॉलम्स. ओके, नाउ लेट्स से दैट माय इमेज हैज x इज आल्सो कॉल्ड विड्थ, y इज आल्सो कॉल्ड हाइट. तो अभी के लिए मैं समझता हूँ कि x की जो विड्थ है या x कोऑर्डिनेट की जो वैल्यू टोटल वैल्यू है, लाइक फ्रॉम दिस पार्ट टू दिस पार्ट is 500 and for y 600. ओके, तो अगर मैंने यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करना है लाइक दिस, तो मुझे करना क्या होगा, x से मुझे यहाँ तक कितना खिसकाना है अपने इस सर्कल को. अगर मैंने अपने कर्सर यहाँ पे रखा है और यहाँ पे मैंने लेफ्ट क्लिक किया, तो इसका मतलब है कि मेरा जो कर्सर की x कोऑर्डिनेट है यहाँ से मैंने कितना खिसकाया है और y से मैंने कितना खिसकाया है ऊपर से. तो ये लगभग आपका जो होगा 20 जो होगा x से होगा तकरीबन, ये मैंने अंदाज़ा जिस लगाया है, और y का 30 होगा. सो मीन्स दैट आई हैव ड्रॉ दिस सर्कल एट द पॉइंट वेयर x वैल्यू इज 20 and y value is 30. If I want to draw a circle here, then I have to calculate the x value from here and y value from here. Let's say this time I have right clicked, so it will be rectangle. So definitely total is 500. So अगर मैंने यहाँ से खिसकाना है तो 440 x का वैल्यू होना चाहिए, और अगर ऊपर से खिसकाना है तो 490, तकरीबन टोटल 600 है, तो तकरीबन 500 या 490 ऊपर से मुझे इसको खिसकाना होगा. अगर आपने यहाँ पे ड्रा करना है द सेम थिंग गोज. सो आई होप यहाँ पे आपको आइडिया हो गया कि x एंड y से आप अगर इमेज के अंदर आपने ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना है तो आपके कोऑर्डिनेट्स जो होने चाहिए वो x एंड y. X and y are nothing. X is also called width, y is also called height, or column. X is also known as row. Okay, so the next project is that we have an image Elon Musk. The moment here, if I click left, I want to get x coordinate position value and y coordinate position value in real time, and I print it right there. Okay. And if I click left, then I want to get the BGR value of my image. Okay, तो ये मेरा इमेज है, वही सेम इमेज, उसकी वही सेम विड्थ एंड हाइट है, वही सेम कोऑर्डिनेट्स है, राइट. सो लेट्स से आई क्लिक्ड हियर, लेफ्ट क्लिक्ड, सो इट्स मीन दैट आई एम टेकिंग x पोजीशन, y पोजीशन. सो अगर x को अगर यहाँ पे मैंने कर्सर क्लिक किया है तो इसका मतलब है x यहाँ से कितना किसका है वो वैल्यू मैं उठा रहा हूँ, और ऊपर से y कितना किसका है वो वैल्यू मैं उठा रहा हूँ. ठीक है, लेट्स यहाँ पे है, तो मैंने वही वैल्यूज यहाँ से उठाने होंगे. कैसे उठाने होंगे वो हम कोड में देखेंगे. तो लेट्स से यहाँ पे मैंने क्लिक किया है राइट के क्लिक पे मैं चाहता हूँ कि मैं अपने उस एरिया का, जिस एरिया पे मेरा कर्सर है उस एरिया का BGR कोड उठाओ, कलर वैल्यू. तो जो B का वैल्यू है वो है 111, G का वैल्यू है 333, R का वैल्यू है 4. तो इसका मतलब है ऊपर से कितना है और लेफ्ट से कितना है, यानी x एंड y कोऑर्डिनेट्स के बेस पे भी मैंने अगेन यही चीज़ें करनी होंगे. सो आई होप आपको समझ आ गया. नाउ let me open PyCharm and I'll copy this code from here. Let me go to app.py and paste it. Baki I'll also copy this code from here. Okay, Control C and अभी के लिए मैं इसको पास करता हूँ. Let me paste it. This time I'm not going to use this blank image because I'm using my own image. So image will be equal to cv2 dot let me zoom in, cv2 dot imRead function, और यहाँ पे एलान मस्क इमेज. तो मैं इन दो को अभी के लिए अगर जस्ट मैं इसको रन करूँ, बाकी चीज़ें एज इट इज़ होनी चाहिए. तो एलान मस्क काफ़ी बड़ा है, चले इसको रिसाइज करते हैं और
और एलान मस्क को रिसाइज करना है तो आप यहाँ पे इमेज को अपडेट कर सकते हो बाय यूजिंग CV रिसाइज फंक्शन। इसको आप देते हो सोर्स कि आप क्या चीज़ रिसाइज करना चाहते हो, इमेज को, और कहाँ तक 500 में इसकी विड्थ रखना चाहता हूँ और इसकी हाइट में 550 रखना चाहता हूँ। तो अभी के लिए अगर मैं रन करूँ तो हमारा एलान मस्क अपडेट हो गया। ना वी हैव 500 विड्थ एंड 550 हाइट, बट let me press Q. Okay, yeah, now we will do the same thing. We have also bind the window, so what we have to do, मैं यहाँ पे काम करता हूँ, ये दो चीज़ें कॉपी करता हूँ, ये दो Ctrl+C, क्योंकि अब चीज़ें बहुत आसान हो गए। बट यहाँ पे इसको मैं अभी के लिए पास करता हूँ और इसको भी मैं अभी के लिए पास करता हूँ। अब मेरा गोल क्या है, when I click left button, okay, then I want to put the value of x and y position। तो मेरे वैल्यू किसके पास हो गए, जब मैं कर्सर हावर करूंगा तो वैल्यू तो x एंड y के पास हो गए। तो बहुत सिंपल होने वाला है, मैं कहता हूं कि x y वैल्यूज विल बी इक्वल टू, यहाँ पे मैं स्ट्रिंग फॉर्मेट का यूज़ करके सिंपली से दैट x विल बी इक्वल टू, अब इसको मैं str में कन्वर्ट करूंगा क्योंकि x के पास जो वैल्यू होगा वो int में होगा, तो मैं इसको str में कन्वर्ट कर दूंगा, राइट। एंड y विल बी इक्वल टू, अगेन मुझे इसको str में कन्वर्ट करना होगा यानी स्ट्रिंग में, इसको y को। सो अब मैं इसको अगर चाहूँ तो यहाँ से भी कट मार के यहाँ पे भी डाल सकता हूँ अपना काम आसान बनाने के लिए, ठीक है, लाइक दिस। सो जब कोई क्लिक मारेगा लेफ्ट बटन तो मैं क्या करता हूँ, x एंड y की वैल्यू को यहाँ से उठा रहा हूँ। बट आप अगर चाहो तो आप कंकैटिनेट भी कर सकते हो। कंकैटिनेट के लिए आपके पास प्लस का बटन है, पाइथन में आप प्लस का button use button, not button, like this. If you can say like this, plus y, you can also do that. Okay, so और ये यहाँ पे बल्कि हम भी कंकैटिनेशन करते हैं, मे बी हमें कोई एरर आ जाए, वी डोंट नो। सो बहुत आसानी, थोड़ा सा प्लस, उसके बाद str, ज़्यादा फ़र्क नहीं था, बट लेट्स ट्राई दिस वन। और उसके बाद यहाँ पे मैं कामा डाल के y का वैल्यू डालता हूँ और यहाँ पे str y को, ठीक है। सो अब मैं सिंपली क्या करूँगा, इसको प्रिंट करूँगा। और जब आप विंडो पे कोई चीज़ प्रिंट करते हो, अभी के लिए मैं इसको रिमूव करता हूँ, उसके लिए आप यूज़ करते हो CV put टेक्स्ट, किसके ऊपर, इमेज के ऊपर, क्या चीज़, x एंड y। x एंड y के बाद आप इसकी क्या देते हो, पोजीशन, कि आपकी पोजीशन क्या होनी चाहिए, तो वो जहाँ पे कर्सर होगा, और कर्सर की वैल्यू किसके पास होती है, x एंड y के पास। उसके बाद आप फॉन्ट फेस देते हो, फॉन्ट फेस इज़ नथिंग बट यू कैन से स्टाइल, तो उसके लिए आप CV2.font, बहुत सारे पैरामीटर्स है, बट आई यूज़ फॉन्ट हैश प्लान, राइट। उसके बाद आप इसका फॉन्ट स्केल दे सकते हो, मैं 1 डालता हूँ। कलर सीक्वेंस दे सकते हो, सो मैं वाइट यूज़ करूँगा, या आप यहाँ पे आसमानी कलर जो होता है वो भी यूज़ कर सकते हो। आई थिंक दिस रिप्रेजेंट, ये कलर आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, आपको नेट से मिल जाएगा। दिस आर दी BGR वैल्यूज़, ओके, हेक्साडेसिमल जिसे आप कहते हो। और थिकनेस अगेन लेट मी यूज़ 3, सो लेट मी कॉल दिस फॉर नाउ। तो अगर मैं यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करूँगा, ये देखो वी आर गेटिंग, बट इट्स नॉट क्वाइट गुड। I just let me make it a little bigger. I think, yeah. Why it's not? They are blurry. Otherwise we are getting the values, but they are blurry.
where is the issue? The issue is somewhere here. Okay, so but there should not be error, but I don't know why. Okay, anyways, I think let me use them outside the function, maybe. So let me run it again, because we okay, so let me make it 3 and let me make it 5. The font face, sorry, scale. Now it's perfect. So X, currently my cursor is here, so if I click here left button, I am getting the X and Y coordinates from here, right? As you can clearly see. Let me decrease the let's say 2. Let me run it again. So yeah, now it's perfect. Okay, now let's do the second part. Now it's quite simple, just copy this thing. Okay, Control C and Control V, but let me remove it. So let me change the button, event button to R, meaning if I click right button, that I want to get the values of color meaning BGR values. नाउ इसके लिए आपको थोड़ा सा ट्रिक लगाना होगा. वैसे ये आप अंदर यूज़ कर सकते हो, इसका इशू नहीं था. द इशू वाज बिकॉज ऑफ द फेस. दिस यू हैव टू इंक्रीज इट अ बिट. ओके ओके, अब मेरा गोल है कि मैंने यहाँ पे जब मैं क्लिक करूँगा तो मैं यहाँ पे BGR वैल्यू निकालूँगा. तो वो बहुत आसान है. मेरे कर्सर की वैल्यूज़ किसके पास होते हैं? पोजीशन X एंड Y के पास. लेकिन ये मैं इमेज के अंदर पास करूँगा Y एंड X को, और ये 0 पे. 0 चैनल रिप्रेजेंट करता है BGR को. उसके बाद G का मैं सेम यही काम करूँगा, लेकिन चैनल 1 होगा. यानी इमेज के अंदर जाके मैं उसकी Y कोऑर्डिनेट शेप निकाल रहा हूँ, X शेप, और उसकी 3 चैनल है, और 3 चैनल के 3 वैल्यू है 0, 1, 3. सिंपल. 1 रिप्रेजेंट करता है G को. एंड फाइनली वी हैव R, BGR. सो इमेज के अंदर जाके X एंड Y पे जो चैनल 2 है मीनिंग 3 है वो निकलवाओ, और ये 2 जो रिप्रेजेंट करता है ये R होता है. ठीक है, अब इनको मैं कंबाइन कर दूंगा ताकि मैं एक साथ इसको दिखा सकूँ, और इसको मैं कहता हूँ BGR. नॉर्मली इमेज RGB में होता है, लेकिन OpenCV BGR में इसको रीड करता है. सो अब मैं क्या करूँगा, वही स्ट्रिंग कंकैटिनेशन करूँगा. सो B विल बी इक्वल टू, मैं इसको str में कन्वर्ट करूँगा B को, प्लस उसके बाद BG विल बी इक्वल टू, just 1 minute, G will be equal to concatenate with str, that will be G, and finally we have R value. So yeah, RGB str R, और यहाँ पे मैं डालूँगा BGR. बाकी चीज़ें सेम होंगी, कोई चेंजेस नहीं होगी. हाँ, आप कलर को चेंज कर सकते हो. आप अगर चाहो तो आप यहाँ पे ये कलर यूज़ कर सकते हो. ये राइट क्लिक बटन पे होगा, मतलब जब कोई लेफ़्ट क्लिक करेगा तो ये ऑपरेशन होगा, और राइट पे ये ऑपरेशन होगा. सो देखते हैं होता है क्या. सो अगर मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँ, दैट आई एम गेटिंग B color value is 195, for G 177, R is 150. Let's say I'm getting this, my cursor is here, I'm getting this value. But if I click left up, then I'll be getting the position or the coordinates. तो या ये था कंप्यूटर विजन का आज का प्रोजेक्ट. नाउ दिस प्रोजेक्ट कैन बी वेरी यूजफुल फॉर यू, कि अगर आप बड़े कंप्यूटर विजन के प्रोजेक्ट के साथ डील करते हो तो इसी तरह के टास्क आपको परफॉर्म करने पड़ते हैं. तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो,
और हाँ, उन 2 प्लेलिस्ट को लाजमी एक्सेस करना, वो बहुत ही बेनिफिशियल होने वाले हैं।